A warm and cordial welcome to each one of you viewing the 72nd Republic Day celebrations at Holy Family Convent High School and Junior College, Vasai. We are indeed blessed and privileged to be a part of this celebration. It becomes our moral duty to pay a tribute to all the great leaders and the martyrs on this auspicious occasion. To begin with, we shall now have Master Ashin with a prayer song. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By roadways in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will definitely make a way for each one of us. We need to have a strong conviction that He will be there for all of us, and very soon we shall all have sunny days ahead. I now request Mother Superior to kindly hoist the flag. Thank you, respected Mother, for hoisting the flag and making this auspicious occasion a moment to cherish. It gives me great pleasure to welcome our dear principal, Sister Lizzie,
to address our online audience on the 72nd Republic Day. Respected Mother Superior, sisters, parents, dear teachers, and my dear children. Today we have gathered here to celebrate Republic Day of our country 2021. 26 January 1950, Indian Constitution was adopted after attaining the independence on 15th August 1947. Dr. B.R. Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. It is written by the people and for the people of India. Adoption of Constitution signifies the complete removal of British rule. It reminds us about the function of every Indian in society. Republic Day is not less than a festival. The whole country beams with joy and happiness. The entire country is laced in tricolor to convey India as a nation where unity in diversity is celebrated, and also gives the message of solidarity, equality, harmony, etc. Republic Day parade reminds us that the security of territorial sovereignty is the outcome of many sacrifices. People from across the country pay tribute to the freedom fighters. This day, Prime Minister, Chief Ministers of states, all institutions unfold the tricolor flag and honor our country and the drafters of its constitution. On this occasion of Republic Day, I appreciate all my dear staff and students for your wonderful works to express our honor towards our country. On this memorable day, let's remember in gratitude the martyrs who sacrificed their life for our country. Let's pray for the well-being of our nation, our Prime Minister, fellow ministers, civil and administrative authorities, legislators, all the members of judiciary, selfless and devoted armed forces who are guarding our country. Let's strive to gain inspiration from the great leaders. Let's try to fulfill the dreams of Mother India. May God bless each one of you to become a good citizen. Jai Hind. We are forever grateful for your impact on this institution and will surely abide by your guidelines and uphold the values of the school. अनेकता में एकता, यही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है. I now request Miss Sonali to deliver a speech in Hindi. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तन में जान है. आज हम सभी भारतवासी देश का 72वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं. आज़ादी के बाद देश को एक ऐसे संविधान की ज़रूरत आ पड़ी जिससे न सिर्फ देश को मजबूत बनाने बल्कि देश को तरक्की के रास्ते पर भी ले जाने में मदद मिले. फलस्वरूप भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने इसके निर्माण की शुरुआत की. इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ. इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा जिसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य के साथ साथ निहित अनुच्छेदों का भी ब्यौरा है, जिसके 22 भाग हैं. भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा. 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई तथा 26 नवंबर 1949 को इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू किया गया. हमें यह समझना चाहिए कि हमारे देश में दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि तथा हजारों विधान हैं जो जोड़कर सबको एक साथ रखे वो संविधान है. 150 साल की गुलामी के बाद हमारा देश अंग्रेजों के जंजीरों से आज़ाद हुआ और देश में लोग खुशहाली के साथ रहने लगे. संविधान के अनुसार हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौम गणराज्य बना जो न्याय, क्षमता, स्वातंत्र्य तथा बंधुत्व को उजागर करता है.
अतः हर नागरिक को ये चाहिए कि वे अपने देश के प्रगति के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन भी करे। जाति भेद, विषमता और अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर भारत माँ का सम्मान करे, तभी हमारा देश सुजलाम सुफलाम बन सकेगा। अंत में अपनी वाणी को कुछ पंक्तियां कहकर विराम देना चाहूंगी। हम सभी को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम न जिए धर्म के नाम पर, न मरे धर्म के नाम पर। देशभक्तों के बलिदान से आज़ाद हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Students of today are the visionaries of tomorrow. We need to imbibe true values and ideals in their minds. Presenting before you, Fancy Dress by the students of Standard 3. Good morning, respected Principal Madam, teachers, parents, and all my dear friends. I would like to thank you for giving me such a great opportunity to speak on our Republic Day. My name is Nirya Nelson Vaghela. I study in class 3rd B. Today, we are celebrating 72nd Republic Day of our nation. This is a great moment for all of us. We should pray to God for the development and prosperity. Now we are going to start fancy dress for standard 3rd. Kindly enjoy and thank you. Living in a democratic republic, we have the freedom in our minds, faith in our words, pride in our heart, and patriotism in our souls. I now request Ms. Riddhi Wadkar to deliver a speech in Marathi. आपला तिरंगा ऐटीत फडकत आहे, आपला तिरंगा ऐटीत फडकत आहे, आपल्याशी काहीतरी बोलत आहे. तिरंगाच्या रंगात रंगू चला, तिरंगाच्या रंगात रंगू चला, शौर्य शांती समृद्धीची वाट धरू चला. आपल्या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले व 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात आली. भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. आज हा प्रजासत्ताक दिवस साजरा करण्याचा मुख्य कारण म्हणजेच संविधान होय. म्हणजेच या दिवसापासून खरे प्रजेची सत्ता झाली होती. 26 जानेवारी 1949 रोजी अधिकृत संविधान स्वीकार करण्यात आले व 26 जानेवारी 1950 अंमलात करण्यात आली. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व संपूर्ण मसुदा समितीच्या सदस्यांनी संविधान निर्मितीची जबाबदारी पूर्ण केली. संविधानाच्या अनुसार आपला देश सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य बनला. पण आज या देशातील जातीय दंगली, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, महिलांवरचे अत्याचार पाहिल्यावर सगळ्यात पहिला प्रश्न पडतो, हाच तो क्रांतिकारकांच्या स्वप्नातला भारत का? नक्कीच नाही मित्रांनो. प्रजासत्ताक देशाचे पावित्र्य आपण सर्वांनीच राखले पाहिजे. शेवटी एवढेच म्हणते, आपण सर्वजण एकोप्याने राहून आपल्या देशाची प्रगती झाली पाहिजे. तेव्हाच माझा देश सुजलाम सुफलाम होईल. भारत माता की जय. Our motherland is nourished by the sacrifices and courage of our soldiers, where the journey is tough but a noble one. Presenting before you students of Standard 6 as they dance beautifully to the song Teri Mitti.
नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। With a pure patriotic fervor in their hearts, the students of Class 4 are all set to showcase their placards in the display, giving a beautiful message to the online audience. The students of Standard 1st and 2nd are all set with great vigor and enthusiasm, as they are all ready to dance and sing this beautiful song, Hum Honge Kamyab. होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
It was indeed a beautiful action song by the students of class 1st and 2nd as they confidently say, "Hum honge kamyab ek din." I now request Ms. Prisha Shetty to deliver a speech in English. कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ सबको गले लगाए, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं. Dear friends, on this 72nd Republic Day, I extend my warm greetings to all of you. The Constitution of India officially came into effect on January 26, 1950. Many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, etc. strived hard to get freedom for India. The father of our constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar, was the first to chalk out the guidelines on which our constitution was formed. Being the chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar played a massive role in the drafting of the Indian constitution, which is famous for being the lengthiest constitution in the world. The Indian constitution is also known as the Bharatiya Samvidhan, as it is a democracy which is of the people, by the people and for the people. The objective of framing the constitution is a twofold process. First, to lay down the form of a political democracy. Second, to lay down that our ideal is an economic democracy. Today, we live in a Republic India comprising of 29 states. In these different states, there are people who speak different languages and follow different cultures. We Indians are like a giant tree with many branches and leaves, but one trunk, which is our constitution that connects all of us to our roots. The presence of such vast cultures, languages and religions prove the phrase unity in diversity. I would like to conclude by saying, I salute my flag, it makes me proud. I am an Indian, it says out loud. Jai Hind! Thank you. Dance is a beautiful form of art. Presenting before you students of class 7 dancing to the mesmerizing song Ye Watan, paying a tribute to our motherland. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे
पे शाद रहे तुम। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। है वतन मेरे वतन, आबाद रहे तो। Republic Day celebrations would be incomplete without a display. Presenting before you students of Standard 5 as they showcase their talent while they display the two signs, a circle and a plus sign. We all need to have a positive attitude in life, and the circle which stands for completion. We have to complete all tasks taken, no matter whatever hurdles we come across. Presenting before you the energetic, vibrant students of Standard 5. Girl, I got you so right, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so push it back on it, bring it back on it. Push it back on it, bring it back on it. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Push it back on it, bring it back on it. Wine if you wine it, girl. Same time I time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign it. Words of gratitude play a pivotal role in our lives. On behalf of the institution, I take this opportunity to thank each one of you for taking this time to watch our Republic Day celebrations. Stay blessed, stay connected. Jai Hind.